Hello class and good morning, and we are discussing the same chapter, that being the P block element. And in the P block element we already started the group 15 element and what is general properties, general phenomena and the exception of this P block element, that means 15 group elements. So right now we have in 15 block element, that means the properties of nitrogen and its compound. Yeah, you can say you have the chemistry of nitrogen compounds. Chemistry of nitrogen compounds, yeah, nitrogen containing compounds. In the first you have dinitrogen. Second, we will discuss about you have NH3, that means ammonia, and third we will discuss about the most important, yeah, quite useful compounds of this nitrogen family, that means HNO3. Not in nitrogen family, that means nitrogen containing compound nitric acid. Clear? So see, first of all, dinitrogen. As we know that this dinitrogen is denoted by N2, that means it contains N triple bond N. क्लियर? क्या आपके पास है N ट्रिपल बॉन्ड N आपके पास है. सो ये आपके पास है डाइनाइट्रोजन. सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे प्रिपेयर होगा आपका डाइनाइट्रोजन? वी सी दैट यू हैव NH4Cl aqueous plus Na2 sodium nitrite. When these two are heat up, it will give you nitrogen plus you have H2O. ठीक है? N2 it will give out and the H2O is also give, and some amount of CO and HNO3 is also formed in this reaction. Clear? So this nitrogen is basically gaseous forms, that is this N2 is gaseous forms. So this you have ammonium chloride when react with the sodium nitrite and given out in the presence of heat. So this will form N2 and H2. Clear? And the main thing is that in this reaction some amount of CO, some amount of NO, not CO, NO and HNO3 is also formed. See, ठीक है? And generally these NO and HNO3 are called impurities of this reaction. ठीक है? These are the impurities of this reaction, and these impurities is removed by the bubbling of this N2 gas in aqueous sulfuric acid solution in the presence of dichromate या potassium dichromate. ठीक है? हम इस N2 के अंदर बबलिंग करेंगे and will get the pure nitrogen, and these impurities will be left out. ठीक है? So this is the main preparation of your nitrogen, that means dinitrogen. ठीक है? Second thing is that you can see what is the chemical properties of dinitrogen. Clear? Second topic is that properties of dinitrogen. ठीक है? Now see, N2 आपके पास है. N2 is mostly very unreactive molecule. ठीक है? बहुत ज्यादा क्या होता है? Unreactive होता है. ठीक है? This is unreactive at room temperature. Unreactive at रूम टेम्परेचर, यानी कि जब का रूम टेम्परेचर होगा वहां पर जो डाइनाइट्रोजन है वो बहुत कम रिएक्ट करता है. ठीक है? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ठीक है? ड्यू टू, यू कैन से फर्स्ट रीजन यू हैव वेरी स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन. ठीक है? वेरी स्मॉल साइज ऑफ नाइट्रोजन, वेरी स्मॉल साइज. ठीक है? एंड सेकेंड यू कैन से हाई bond dissociation enthalpy.
ठीक है। एक तो नाइट्रोजन का जो आपका साइज होगा बहुत स्मॉल साइज होगा, ठीक है। एंड सेकंड रीजन इज दैट इट हैव वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, ठीक है। बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, दैट्स व्हाई इट इज वेरी अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। बट व्हाट हैपन व्हेन वी विल इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ रूम या व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर, सो रिएक्टिविटी ऑफ नाइट्रोजन इज आल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। दैट मीन ऑन increasing temperature reactivity is also increases, ठीक है। यानी कि जो नाइट्रोजन का रिएक्टिविटी होगा वो इंक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाई नाइट्रोजन इज अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू these two following reasons. It's clear? Now, if it is clear, then note down the second properties या chemical properties, ठीक है। Second chemical properties, you can see that you have action of litmus paper or solution, ठीक है। देखिए नाइट्रोजन इज मोस्टली न्यूट्रल इन नेचर, दैट मीन N2 is neutral in nature, so it does not affect litmus paper. It does not affect litmus paper, ठीक है। आपका क्या होता है, डाइनाइट्रोजन एक न्यूट्रल आपके पास गैस है, ठीक है। इफ इट इज न्यूट्रल गैस दैट मीन देयर इज नो इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, ठीक है। एंड रिमेंबर दैट इफ यू हैव द गैसेस substances या gases molecules, so remember that these gases are not react with the litmus paper. Why? Because to react with this litmus paper, blue or red, we have to aqueous solution of any particular gases या you can say any substances, ठीक है। आपके पास उनका aqueous solution होना चाहिए, तभी आपका वो क्या करेंगे, आयंस को लिबरेट करेंगे, दैट मीन द कैटायन और दी आपका हाइड्रोक्साइड है, इट्स क्लियर। तभी वो आपको H देगा या OH नेगेटिव आयंस आपको प्रोवाइड करेगा, ठीक है। और वही आपकी अफेक्ट करेंगे इस लिटमस पेपर को, ठीक हो गया। चलिए नाउ थर्ड प्रॉपर्टी यू हैव एक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। नाइट्रोजन का एक्शन आप देखना चाह रहे हैं मेटल के साथ, सो रिमेंबर दैट नाइट्रोजन इज ओनली कंबाइंड या ओनली रिएक्ट विथ हाईली रिएक्टिव मेटल, ठीक है। जो भी आपके पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स होंगे उनके साथ नाइट्रोजन क्या करेगा, इजिली कंबाइन होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि नाइट्रोजन का जो रिएक्टिविटी ऑर्डर है वो बहुत लो रिएक्टिविटी ऑर्डर का नाइट्रोजन आपके पास है, ठीक है। सो इट हैव दिस मेटल इज हाईली रिएक्टिव, लाइक यू हैव द लिथियम, you have the calcium, you have the magnesium या potassium, and then you have reactive metal. So it react with the reactive metal to form nitrides, ठीक है। क्या बनाएगा, to form nitrides बनाएगा, ठीक है। आपको क्या बना के देगा, nitrides निकाल देगा। Suppose you have the first metal is lithium Li plus you have N2, so it will form एंड सेकेंड थिंग्स आपके पास लिथियम है, हाई रिएक्टिव मेटल आपके पास है, इन द सेम ऑर्डर आपके पास क्या मिलके आ जाएगा, सपोज कैल्शियम मिलके आ जाएगा या फिर मैग्नीशियम मिलके आ जाएगा, सो इट विल फॉर्म द प्रोडक्ट, ठीक है। सो इट विल फॉर्म प्रोडक्ट लिथियम नाइट्रोजन, सो इट विल फॉर्म Li3 एंड लिथियम नाइट्राइड यू हैव, ठीक है। सपोज यू हैव कैल्शियम Ca plus N2, ठीक है। सेम ऑर्डर इट विल आल्सो फॉर्म द प्रोडक्ट ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड, दैट मीन Ca3N2, ठीक है। इट विल फॉर्म द कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है। मैग्नीशियम होगा इन द सेम ऑर्डर, इट विल अगेन फॉर्म द नाइट्राइड विद द मैग्नीशियम कॉल्ड मैग्नीशियम नाइट्राइड्स, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द एक्शन ऑफ मेटल या एक्शन ऑफ नाइट्रोजन विद द मेटल, ठीक है। दिस थिंग इज क्लियर, दैट मीन टू फॉर्म नाइट्राइड्स।
It's clear? So see, after this we will discuss the action of nitrogen with non-metal. Clear? Action of nitrogen with non-metal. So see, this nitrogen is mostly combined with the non-metal of hydrogen and dioxygen. Okay, you can say that nitrogen is combined with dihydrogen and dioxygen in a very suitable manner. Okay, suppose first you have a combination of nitrogen with dihydrogen. So what will happen? Okay, dihydrogen you have, suppose you have N2 plus dihydrogen. We all know that this is a very beautiful reaction called the formation of ammonia, and see you have that means there is 2 and 3. Okay, in the presence of molybdenum, in the presence of Fe. Okay, sometimes we use the copper and the temperature and the pressure. जो भी आपके पास phenomena से to prepare this ammonia called the manufacturing of Haber process या manufacturing of ammonia by Haber process. ठीक है, तो ये रिएक्शन डिस्कस करने वाले हैं आगे बड़ी बहुत ब्रॉड मैनर में. ठीक है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स यहाँ अप्लाई करेंगे टू फॉर्म द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया. ठीक है, सो दिस इज द सिंपली कॉम्बिनेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन विद नाइट्रोजन. क्लियर? नाउ सी सेकंड थिंग्स यू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन विद डाइऑक्सीजन. So see what will happen. You have N2 plus O2. Firstly, it will give you NO, nitrogen oxide. ठीक है, मेन जो स्टेप्स होगा वो क्या होगा आपका N2 plus O2. It will give you NO, nitrogen oxide. But remember that this compound, that with nitrogen oxide, is very unstable. It's very unstable. But what will happen in the same case? At the same time, it will again react with the excess oxygen from the atmosphere, and directly convert into nitrogen dioxide. That means a stable compounds. ठीक है, तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा. And this NO2, we all know that this is a very highly stable compound. So this reaction N2 plus O2 to convert into NO, nitrogen oxide. एक आपके पास अनस्टेबल कंपाउंड है, मॉलिक्यूल है. ठीक है, सो इट्स रैपिड रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन टू फॉर्म ए स्टेबल कंपाउंड कॉल्ड नाइट्रोजन ऑक्साइड. ठीक है, या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. इट्स क्लियर? सो these are the chemistry of dinitrogens with the different you can say metal and the non-metal, and the action of this dinitrogen with the litmus paper and all. It's clear? So see, this is all about dinitrogen, and next compound you have a quite useful compound. You have ammonia. ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड आपके पास है दिस नाइट्रोजन क्लास फैमिली का, जिसे हम बोलते हैं अमोनिया. ठीक है, एंड सी अमोनिया क्या आपके पास है. ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट द प्रिपरेशन. ठीक है, ऑफ अमोनिया, या यू कैन से द अमोनिया इज प्रेजेंट इन ए स्मॉल क्वांटिटी इन एयर एंड द सॉइल. ठीक है, जहां पर हम बात करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स जो होते हैं वो कन्वर्ट करता है आपका एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इन अमोनिया. ठीक है, बहुत सारे आपके पास नाइट्रोजनस कंपाउंड्स आपके पास हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करता है आपका अमोनिया के अंदर. ठीक है, सो सी द फर्स्ट ऑफ ऑल दिस अमोनिया इज रिलीज बाय डिकेइंग ए कंपाउंड कॉल्ड यूरिया. ठीक है, वी ऑल नो दैट यूरिया. ठीक है, यूरिया क्या करेगा? स्लोली डिकम्पोज होगा, डिके करेंगे यूरिया का, एंड इट विल गिव यू अमोनिया. ठीक है, ये आपको क्या दे देगा? अमोनिया. यू हैव NH3
NH2CO, NH2 is a formula of urea, ठीक है, and when it will decompose in this manner H2O, so it will give you NH3 plus CO2 and NaCl, not NaCl. It will give you these two primary compounds called NH3 and CO. ठीक है, चलिए ये मिला आपको द डिकेइंग ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया, ठीक है, ये आपको मिलेगा इन द केस या तो सिंपली इन द एटमॉस्फेयर डिकेइंग ऑफ यूरिया इनटू अमोनिया. Now see, so second things, how we prepare this ammonia from in a laboratory. You can say simply you can take a salt of ammonia, and suppose you have ammonium chloride in the presence of highly alkalis, ठीक है, एक strong alkalis, you can say that जैसे हम इनको mix करेंगे so it will give out ammonia, ठीक है. Suppose the second reaction is that preparation reaction. In the preparation, we are taking the salt of ammonia, that means salt of nitrogen, NH4Cl, plus you have a strong alkalis NaOH, ठीक है, so it will give out NH3 आपको मिलेगा, ठीक है, and second things water is also formed and plus NaCl, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा. तो see that this is called the laboratory preparation method of this ammonia by ammonium chloride in the presence of strong sodium hydroxide या strong alkalis, ठीक है, आपको मिल जाएगा अमोनिया. ठीक हो गया, चलिए these are about the ammonia, ठीक है. Now see, we have a most important thing is that the manufacturing method of ammonia, how we manufacture ammonia in a commercial way. So you can see that we have simply a process called Haber process, ठीक है. क्या आपके पास प्रोसेस है? एक Haber process आपके पास है, ठीक है. You have Haber's process, Haber process, ठीक है. ये आपके पास वो प्रोसेस है, वो मेथड है जहां पर आप अमोनिया का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं कमर्शियल वे. ठीक हो गया, चलिए कैसे करेंगे Haber process? As I told you earlier, you have hydrogen gas plus you have nitrogen gas. When it is combined in the presence of, you can say molybdenum you have, ठीक है, आप Fe का यूज करते हैं at a high temperature, या you can say and see it will form twice of NH3, ठीक है, 2s2 3s2 6 and 2 plus some amount of heat delta H is equal 90 2 point something 4 किलोजूल पर मोल, ठीक है, इतना आपके पास मिलेगा किलोजूल पर मोल. आपको क्या मिल जाएगा? हीट मिल जाएगा, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 92 समथिंग जो भी आपका वैल्यूज है, ठीक है. नाउ सी यू स्टार्ट एब्जॉर्बिंग या ऑब्जर्विंग दिस रिएक्शन. क्या हो रहा है यहाँ पे? हाइड्रोजन आपके पास है, नाइट्रोजन है, these are the gases and forming this ammonia NH3. Now see this quantity of delta H. Delta H is equal to minus 92.4 किलोजूल पर मोल या 92.2 समथिंग किलोजूल पर मोल. इतना आपका हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है. दिस नेगेटिव साइन इज शोज दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक. रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है. कैसे रिएक्शन हो रही है आपके पास? एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है. सो सी दैट हाउ विल ऑब्टेन ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया फ्रॉम दिस Haber प्रोसेस, ठीक है. हमें क्या चाहिए? एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया चाहिए बाय दिस रिएक्शन कॉल्ड Haber प्रोसेस. सो व्हाट कैन वी डू टू ऑब्टेन मैक्सिमम? सो वी कैन अप्लाई ए प्रिंसिपल्स, very well principles known as the Lee-Chatterley principles. क्या होता है वहां पे? Now discuss according to principles, ठीक है. देखिए रिएक्शन आपके पास क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द फैक्टर्स ऑफ दिस रिएक्शन कॉल्ड द टेम्परेचर.
ठीक है, लेकिन टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा? इफ देखिए रिएक्शन ऑलरेडी आपकी एंडोथर्मिक है, so we have to use a optimum maximum या optimum temperature for this reaction, या you can say we'll use a low temperature to carry out the reaction in forward direction. ठीक है, आपको रिएक्शन लेफ्ट टू राइट लेके जाना है, so you can say that हमें क्या करना है, टेम्परेचर आपका लो रखना है, या you can say we'll use a optimum temperature for this manufacturing. ठीक हो गया? सेकंड थिंग्स कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ सकता है? ठीक है, देखिए वी आर यूजिंग द मॉलिब्डेनम Fe का यूज हम कर रहे हैं, ठीक है, सो यू कैन से दैट व्हेन वी यूज द कैटलिस्ट द रेट ऑफ रिएक्शन इज आल्सो इनहांस्ड एंड वी विल गेट ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ दिस अमोनिया. ठीक है, ए मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अमोनिया आपको ऑब्टेन होगा एट व्हेन वी यूज द कैटलिस्ट. तो इसका हमें यूज करना है दिस कैटलिस्ट. ठीक है, and you can say that third factor is that pressure. Third factor is pressure. So obviously the high pressure is need to carry out this reaction in forward direction. ठीक है, अमोनिया ज्यादा से ज्यादा बने इसके लिए हमें यूज करना है the low temperature, catalyst and high pressure. ठीक है, इन तीनों बातों का हम ध्यान रखेंगे. So obviously we'll get high amount of ammonia. ठीक है, this thing is clear and this process is known called Haber process and obviously this is a reversible process. ठीक है, जब reversible process होगा तभी हम अप्लाई करेंगे लीच-अटरले प्रिंसिपल्स को. ठीक है, if any reaction is going to in a particular direction, that means going to the forward direction या backward direction, so in this cases we will not able to use लीच-अटरले principles. कहां पर यूज करेंगे हमेशा? this reversible प्रोसेस में यूज किया जाता है लीच-अटरले प्रिंसिपल्स. ठीक है, सो these things are clear, so note down these things. So class, this thing is clear. So see, the next thing is that properties of ammonia. ठीक है, the next thing you have the properties of ammonia. Properties of ammonia या NH3. So see, the first property is that the basic nature of ammonia. ठीक है, we all know that the ammonia is highly you can say dissolvable gas in water. That means it will dissolve perfectly in the water to giving out the hydroxide ion. That means it will form the NH4 plus aqueous plus OH negative aqueous. ठीक है, so it will form this hydroxide ions. So that means this ammonia is basic in nature. Yeah, ammonia property is that basic in aqueous solution. It's clear? Second thing, you can say that this ammonia is act as a Lewis base. ठीक है, अमोनिया कैसे यूज करेंगे आप? एज ए लुईस बेस की तरह यूज करेंगे. व्हाई? बिकॉज ड्यू टू containing a lone pair in nitrogen. ठीक है, जब तक नाइट्रोजन होगा इसमें क्या होगा? लोन पेयर होगा. सो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर दिस NH3 या अमोनिया इज एक्ट लाइक ए लुईस बेस. ठीक है, एक लुईस बेस की तरह क्या करेगा? वर्क करेगा. ठीक है, एंड सेकंड थिंग इज दैट दिस अमोनिया हैव द टेंडेंसी टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, लिखने चाहें, ठीक है, एक लुईस बेस की तरह यूज कर रहे हैं आप लोग. एंड सेकंड थिंग इज दैट इट फॉर्म coordinate bonds with electron deficient species like BF3. ठीक है, BF3 इज इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीशीज आपके पास है, तो टेंडेंसी होगी इसके पास टू फॉर्म ए कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ठीक है, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा आपका इन दिस. दैट मीन दिस NH3 is form a coordinate bond with BF3. ठीक है, कैसा क्या बना दें?
एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा आपका BF3 के साथ, ठीक है। चलिए सेकंड थिंग इज यू कैन से अगेन this ammonia have the tendency to form complex with transition metal, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स के साथ क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन का टेंडेंसी भी होगा नाइट्रोजन के पास ड्यू टू हैविंग द स्मॉल साइज, ठीक है। स्मॉल साइज भी है आपके पास और क्या है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लोन पेयर भी है टू प्रोवाइड ट्रांजिशन मेटल्स। वाई, बिकॉज ट्रांजिशन मेटल के पास क्या होगा, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स थे, लास्ट आपने डिस्कस किया था इन द डी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। एम्प्टी डी ऑर्बिटल है आपके पास टू ट्रांजिशन मेटल्स, सो आपका नाइट्रोजन क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा, ठीक है। एंड सो इन दिस मैनर इट विल फॉर्म द कॉम्प्लेक्स। सपोज यू हैव द कॉपर +2, you can say copper +2 simple, and you have the ammonia, so it will form a complex, ठीक है। कैसा कॉम्प्लेक्स बनाएगा, Cu NH3 होल 4 +2, ठीक है। एक कॉम्प्लेक्स बना देगा और इस कॉम्प्लेक्स का कलर भी हम डिसाइड कर चुके थे लास्ट टाइम पर, डीप ब्लू कलर का था, ठीक है। कैसा कलर आपके पास है, डीप ब्लू कलर आपके पास है, ठीक है। और NH3 क्या होगा, आपका लिगेंड्स की तरफ वर्क करेगा। लिगेंड्स क्या होते थे वहां पे, जो आपका लोन पेयर डोनेट करते थे टू दिस ट्रांजिशन मेटल को, ठीक है, बिकॉज दे हैव द एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स। दिस थिंग इज क्लियर, ठीक है। कलर कैसा आपके पास है, डीप ब्लू कलर आपके पास है दिस कॉम्प्लेक्स का। चलिए ये तो बात हो गया अमोनिया का, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने का टेंडेंसी भी है और कॉम्प्लेक्स भी बनाने का टेंडेंसी है अमोनिया के पास। नाउ सी अमोनिया आपके पास देखेंगे इन कंबस्टन, ठीक है। रिमेंबर दैट दिस अमोनिया इज नॉट कंबस्टेबल गैसेस एंड नॉट यूज्ड टू कंबस्टन रिएक्शन, ठीक है। ना तो आपका जलने वाली गैस है, ना किसी कंबस्टन रिएक्शन को इनहांस करेगा, प्रोसीड करेगा, ठीक। बट इट विल कंबस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑक्सीजन टू गिविंग आउट नाइट्रोजन प्लस वाटर, ठीक है। ये आपको रिएक्शन देगा अगर आपसे जलाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, एक एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपके पास होगा, सो इट विल गिव यू द नाइट्रोजन गैस, ठीक है, एंड वाटर। So this is the combustion reaction of ammonia. So this is all about the two nitrogen containing compound. The first is the dinitrogen and second is ammonia. So next we will discuss about a very quite useful compounds of nitrogen called nitric acid, that being HNO3.